Namaskar. Namaste. Today we want to talk about caste and all the other versions of names that float around, pretending to talk about caste. A few weeks ago, we had a panel discussion in the Saraswati Sangam project, which was basically talking about rejecting caste and reclaiming our tradition of Varna, Kul, Jati. And the idea there was that caste, and that's what we realized through the conversations in the panel, is caste is a very confused reference to a word that does not have its origin in Indian heritage or Indian literature. And it's really a concept and a word that is imposed on the Indian society. Of course, it has had history of the imposition long enough, running into a couple of centuries, that it is now very deeply intertwined in our conversation among Indian populations. And it's really important to really dig into what caste is supposed to mean and what our own indigenous words are supposed to mean. This is really important from the perspective that the indigenous words have a very technical meaning and a very technical purpose for the social structure of our societies going back to thousands of years. So, if they had a very specific purpose in the meaning of those words that are truly indigenous, they cannot be let go. And that's the clarity we want to establish and obviously create a discourse around the topic of the panel we had of rejecting caste and reclaiming the Varna-Jati-Kul parampara or tradition. Today, I have joining me Bhudev Arya ji, who is going to help us in many future conversations in this fireside chat mode in shedding light on these words that define our own tradition, and in the process really begin to understand how what our indigenous words are differ from the very confused concept of caste and the so-called caste system. So let me begin with asking Bhudev ji to briefly introduce himself so that we understand where he's coming from and truly appreciate his training that can shed some genuine light on the technical words of our tradition. Bhudev ji, please introduce yourself. जी नमस्ते। मैं ब्रह्मचारी भूदेव आर्य और मैं आर्ष परंपरा में सर्वप्रथम अध्ययन करने के लिए हरिद्वार पतंजलि गुरुकुलम के अंतर्गत आया, जो स्वामी रामदेव जी के द्वारा चलाया जा रहा है। वहाँ पर मैंने अष्टाध्यायी और योग दर्शन और गीता, इन जो मूल ग्रंथ है इसका मैंने स्मरण किया। उसके पश्चात जो फिर हरियाणा के अंतर्गत ऋषि उद्यान गुरुकुलम है, जो महर्षि दयानंद के द्वारा जो वहाँ पे संस्था स्थापित है, उसके माध्यम से संचालित ये संस्था हो रही है। वहाँ पर मैंने 2.5 साल अध्ययन किया, जिसमें कि जो व्याकरण का 5 वर्ष का कोर्स होता है, उसमें हमने 2.5 वर्ष का वहाँ पर रहकर दर्शन का मूल मूल सिद्धांत है, फिर व्याकरण जितना हो सका वो सब अध्ययन किया। और फिर मैं वहाँ से हरियाणा प्रांत में आ गया, पाणिनि महाविद्यालय। यहाँ पर रहकर हमने काशिका पर्यंत ये सब अध्ययन किया। और फिर मैं अभी वर्तमान में काशी में रहते हुए महाभाष्य पढ़ रहा हूँ, पतंजलि गुरुकुलम से ही, जो अभी मेरा अभी ऑनलाइन चल रहा है। और फिर बाहर के पढ़ाई में अभी हम एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरा अध्ययन का इतना अंतराल रहा समय के दृष्टि से, और अभी फिर उसी कार्य में रत हैं। Thank you. So, just to give a quick summary of what Bhudev ji shared,
Bhudeji has trained in a very traditional system that pre-existed the British rule in India, which was the traditional Gurukul system of education in India, which was, of course, a very rich framework of very holistic training of our youth, women and men, girls and boys. So Bhudevji has followed that tradition of training and actually received it from various places that he mentioned. And now he is currently further educating other students as well as studying himself towards a law degree. So clearly, he has the right anchor and the right background to be able to educate all of us who don't have the opportunity of the traditional rich training. So let's dive into what the purpose of this specific fireside chat is. So, looking at the word caste and understanding the origin of it, it comes from an Iberian word or root that refers to or is called as casta, and it's been historically used in that context of Portuguese or Spanish language to refer to essentially community and social structure of hierarchy defined by races. So the point here being, if you look at Wikipedia and the meaning of caste as its origin, it obviously places the origin in the Iberian language, in Portuguese and Spanish languages, of course, that we know today. But then if you search around about the word, it starts relating caste system of India as though the predated reference to caste is in India, and it so happens that the casta origin of the word caste comes as reference in Spanish and Portuguese. So, what I'm trying to get at is in Wikipedia, this word is already very confused in what its origin are and what its use in India is, pretending that there is actually a caste system of India, which is the discriminating reference in the society, and somehow it has nothing to do for its ills when it gets referred to in a Spanish language or the Portuguese language. So this confused representation of the word in Wikipedia further highlights the extent of confusion and the extent with which this horrible imposition of a so-called caste system on India has tremendous repercussions in the current psyche and understanding of Hindu society and concepts that are the framework in which Hindu society has been organized for millennia, thousands of years. So let me position that being the comparative context of caste, and then juxtaposing that against the actual indigenous words of Varna-Jati-Kula-Gotra. Now, these are four very important technical words that are actually embedded in our understanding of societal structure, a functioning, well organized societal structure. And that's why it's important to understand these words, because they actually mean something very specific for a very specific purpose and are very well defined. So the objective of this discussion is to lay out these definitions of these words so that in future conversations, we can pull apart the technical definition of these words and the purpose of those words and why it is so confusing to keep referring to caste in Indian context and really muddle it up by pretending that it refers to Varna sometimes, Jati sometimes, Kul sometimes. So that's the purpose. So I'm going to turn back to Bhudevji and request for shedding some light on Gotra, which is the more micro level of defining a human existence in a society. So, Bhudevji, please define Gotra for us. जी, हम जो भी श्रोतागण हैं यह अवश्य ध्यान रखें
कि जिस भी विषय पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कभी हम गोत्र को पर परिभाषा देखेंगे, जाति को लेकर देखेंगे, वंश को, कुल को लेकर देखेंगे, तो ये प्रत्येक शब्द संस्कृत भाषा की है। और संस्कृत भाषा हम पूरी दुनिया आज मानते हैं कि ये वैज्ञानिक भाषा है। उसके पीछे कारण है कि शब्द में ही वो अर्थ छिपा रहता है, वो निहित रहता है। इस कारण से वो भाषा हमारे लिए, तंत्र के लिए, सॉफ्टवेयर आदि के लिए बहुत सर्वाधिक उपयुक्त है। तदनुरूप हम यह चिंतन करते हैं कि यह गोत्र है क्या, गोत्र की अवधारणा हमारे शास्त्रों में कैसी है। वो एक वैज्ञानिक व्यवस्था है जो हमारे जेनेटिक के आधार पर रखा गया है। उसको हम एक बार परिभाषा देखते हैं। गोत्र, गोत्रम कस्मात्, संस्कृत में कहा जाता है गोत्र किसे कहते हैं। तो उसका परिभाषा देते हैं, गाम भूमिम त्रायते इति गोत्रः, जिसके द्वारा मनुष्य इस पृथ्वी या वंश कुल खानदान को रक्षा करता है, वो गोत्र कहलाता है। इसका तात्पर्य हुआ कि ये गोत्र जो है भाई बहन के रिश्ता की तरह होता है, जिसमें कि यह, इसका अवधारणा इस वैज्ञानिकता के आधार पे है कि कोई भी भाई बहन आपस में, पांच छह रिश्तेदार आपस में कोई शादी विवाह न करे। इसलिए यहाँ पर जेनेटिक के आधार पर ये गोत्र की अवधारणा रखी गई है कि गोत्र उसे कहा जाए जो, कि मतलब इस संसार में प्रत्येक मनुष्य की उत्कृष्टता उत्पन्न उत्पन्न होते जाए, उसे गोत्र के अवधारणा के अंतर्गत रखा गया। इसलिए कहा, गाम भूमिम वंशम कुलम त्रायते इति गोत्र, जो भूमि को, धरती को, वंश को, कुल को जो रक्षा करता है, संवर्धन करता है, वो गोत्र कहलाता है। जी। धन्यवाद, थैंक यू। So the word Gotra, as Bhudev ji is describing, is a very scientifically grounded word that defines the genetics or genetic constitution of a person. And the purpose of that genetic constitution defining the Gotra of a person is to ensure that the familial structure is protected by any uh, abuse of the genetic interaction of that person in the familial construct that they propagate their life in. So the idea, of course, then is whatever the genetical constitution of a person may be, it should be protected by their social engagement with people, of course, essentially marriage, so that the propagation of the family is protected of any genetic misconstitution. So it's a very important construct to ensure that at the individual level, the interaction of genetic content of an individual is functioning at a manner in a way that it keeps the family healthy genetically. So clearly, therefore, tracing Gotra over time is extremely important to ensure that the population remains genetically healthy. How can that be ever irrelevant for any society across the world? So let's now move to Kula. So Bhudev ji, let's define Kul now for our audience. कुल शब्द उच्यते तत्र, मतलब संस्कृत भाषा में कहा जाता है कुलम कस्मात्, कुल किसे कहते हैं। तो एक वेद के जो ऋषि हुए हैं, मुनि यास्काचार्य, वो कहते हैं कुष्णाति कुशितम भवति इति कुलम भवति, अर्थात जो सारे कुल वंश को बांध करके रखता है, जिसमें कि विद्या वंश से या जो कुल वंश से आरंभ होकर के आगे बढ़ता है, उसे कुल नाम से कह दिया जाता है, जो परस्पर व्यक्तियों को संगठित करके रखता है। ठीक है। तो इसलिए निरुक्त आचार्य का, आचार्य जो है यास्क मुनि कहते हैं कुष्णाते है इति कुलम उच्यते, अर्थात कुल को बंध कर रखने के कारण उसे कुल कहा जाता है, जिससे कि व्यक्ति आपस में एक सही मार्ग पर बढ़ते रहे और एक वंश से वो व्याख्यात हो किस कुल से है। इसके लिए हमारे यहाँ कुल शब्द की अवधारणा रखी गई है कि जैसे कि हमने कहा कि भाई ये राजकुल से हैं, ये जो है मतलब गार्गी कुल से हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है, गोत्र के परिप्रेक्ष्य में भी कुल शब्द को व्याख्यायित किया जाता है। लेकिन थोड़ी सी लोग में इसकी अवधारणा
अलग है। कुल का मतलब प्रॉपर एक, जहां पर एक मनुष्य की संगठन समुदाय, उस अर्थ में कह दिया जाता है। इसलिए हम दूसरे सरल शब्दों में इसकी परिभाषा समझ ले। कुल वो होता है जो परिवार को आपस में संगठित करके रखे, उसकी श्रृंखला चलती रहे, एक के बाद एक के बाद एक, उसको, उस परिप्रेक्ष्य में हमारे यहाँ कुल शब्दों का प्रयोग होता है। इसलिए कुशितम भवति कुष्णाते हेवा इति कुलम उच्यते। जिससे परिवार को बांध कर रखा जाता है वो कुल कहलाता है जी। Excellent. So, one thing I want to add, which Budevji had said earlier, Sanskrit is a very technically sound language, to the extent that many people are now studying how computer programming can be strengthened using Sanskrit. So every word is derived and can be technically really decomposed to understand what the meaning of that word may be. So Kula, as opposed to Gotra, goes a little bit higher than genetics and really starts to define a social structure at the family level. How does a family intertwine people in the familial structure to ensure a robust family lineage? And so essentially, this clearly rises above the genetics. As people marry, they create an extended mix of genetics and genetic content of the familial structure. And therefore, unifying a familial structure as it progresses in time is grouped under what one would call as kula. And therefore, it is inherits or borrows essentially a social structure that defines the lineage of a person, which obviously is very helpful in understanding the past and the future of the person. And that is very important in the long run well being of a society, for every person to know where they are coming from, what their lineage is, what their ancestors in that lineage have accomplished, for them to carry forward that heritage in time to continue to grow a society for its wealth and prosperity. So, Kul, once again, it's a very important familial structure. And therefore, as families exist across the world, Kul exists across the world. It's actually nothing unique to the Indian history and Indian social structure. It's a very generic word that refers to the familial structure any person belongs to, and how, therefore, the lineage of that individual traces time. Moving on at a next higher level is Jati. So, Budevji, shed some light on Jati. हम्म। जाति के विषय में हम बहुत, पूरी दुनिया इससे त्रस्त हैं, और इसलिए इन सब विषयों को हम आगे चल के जितना विस्तार देंगे उतना ही बेहतर रहेगा। और उसमें हम जाति शब्द को अभी देखने की कोशिश करते हैं कि जाति शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, और ऋषि लोगों ने, जिसे का हम आज के भाषा में वैज्ञानिक कह सकते हैं, महावैज्ञानिक कह सकते हैं, ऐसे जो तत्वदर्शी ऋषि हैं, वो अपने न्याय दर्शन में परिभाषा देते हैं। और जो है आयुर्वेद की जितना जो महान चिकित्सा शास्त्र है वो परिभाषा देते हैं जाति किसे कहा जाता है। और फिर अनेक शास्त्रों ने, विद्वानों ने उसकी व्याख्या भी की है उसी ढंग से। इसलिए जाति शब्द का वहां पर शाब्दिक अर्थ देखेंगे, उस शब्द का जो अर्थ है वो कहते हैं जायते असो इति जाति, अर्थात जो उत्पन्न होता है या उत्पन्न हो गया है उसे जाति कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो नैसर्गिक रूप से, किसी ने बनावट रूप से नहीं, कृत्रिम रूप से नहीं, अपितु जो नैसर्गिक रूप से उनकी आकृति है, उसकी जो उत्पत्ति धर्म है, उसे जाति कहा गया है। इसलिए अब इस सरल शब्दों में हम देखेंगे तो जायते उत्पद्यते असो इति जाति ही, शाब्दिक अर्थ ये हो गया। इसी आधार पर न्याय दर्शनकार कहते हैं, जो महर्षि गौतम हुए हैं, वो कहते हैं कि आकृतिर जाति लिंगाख्या, ये वहां परिभाषा दी है कि जाति किसे कहते हैं। जाति के एक पर्यायवाची शब्द हमारे यहाँ आकृति भी है, इसलिए जाति बराबर आकृति। तो वहां कहा कि भाई जिसकी नैसर्गिक रूप से लिंग
और आकृति जो है बनावटी है, ये जन्मजात हो, उसे वहां पर जाति नाम से कहा गया, आकृति नाम से कहा गया है, जिसमें का हम आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो हमारे इसे नैसर्गिक रूप से ईश्वर प्रदत्त काले, जो ईश्वर को मानते हैं या जानते हैं, उसके द्वारा, अथवा जो स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से जो एक ग्रामेटली तरीका से हम कह सकते हैं कि अपने आप बन के जो तैयार होकर के संसार में आता है, उत्पन्न हो रहा है, उसे जाति नाम से कहा गया है शास्त्रों में। और जाति जो है, इस अवधारणा पे आयुर्वेद कार जो है, चरक सुश्रुत जो है, वो चार प्रकार के बताए जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। वो आगे विस्तार देखेंगे कैसे उसमें चार प्रकार के जाति उन्होंने बताया, वो भी बताया इसी अवधारणा के आधार पे, जो नैसर्गिक हो, जिसके बनावटी जन्मजात हो, और उत्पत्ति धर्म, दो चीजें उन्होंने बताया। नैसर्गिक रूप में आकृति बनावट, जो भी हाथ पैर प्रकृति मुंह कान है, और फिर उत्पत्ति धर्म, उसकी किस अनुरूप हो रहा है। So, as I understand, then what you are saying is jati is something organic that defines a person and identifies people that are organically defined as being similar. So, at a social level, then I would say that they have a common organic nature of being similar, and the reason for that similarity could be many. So let's move to Varna. So what is the technical meaning of Varna? वर्ण के विषय में मुनि यास्काचार्य बोलते हैं, जो कि मैं बार बार उसका उदाहरण दे रहा हूँ, वो इसलिए है क्योंकि वो वेद जो हमारे चार संहिता, उससे जो कहता हूँ उनका ग्रंथ जो है, जिसको हम निरुक्त बोलते हैं, बहुत संसार में आज भी प्रमाणिक है। विदेश के लेखक भी उसको बहुत सर्वग्राह्य माना है वेद को समझने में। उसमें ही ये परिभाषा देते हैं कि वर्ण कस्मात्, वर्ण किसे कहें, कहें कि वर्ण वृणोते है। वर्ण उसे कहा जाता है जो वर्णन होने से, अर्थात चयनित होने से जो लोक में व्याख्यायित हो रहा है, उसे वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहते हैं रूपम रोचते है, जो रूप को व्याख्यायित करता है वो वर्ण कहलाता है। अब ये किस आधार पे होता है, ये अलग चर्चा के विषय हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम अलग शब्दों में कहें, जो कार्य मूलक हो उसे वर्ण कहते हैं। अगर हम जन समान में इस परिभाषा को लाए, मनुष्यों के बीच में लाए, तो जो कार्य मूलक हो वो वर्ण कहलाता है, अर्थात जो पैसा का साधन हो उसे वर्ण नाम से हमारे यहाँ एक मतलब आधिकारिक तौर पे इस वर्ण शब्द को रखा गया है। जैसे उदाहरण के लिए कहें, आईएएस है, और जो है शिक्षा विभाग में और शिक्षा मंत्री वगैरह हैं, ऐसे ऐसे जो पेशा का साधन है, उस अनुरूप में हमारे वर्ण शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए वर्ण कस्मात् अर्थात विरणोते है रूपम रोचते इति वर्ण उच्यते, जिससे लोगों में पेशा का साधन हो उसे हम वर्ण कहते हैं। वो चार प्रकार के, जिसे हमने कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ये इसमें जाति का अवधारणा हमारे सोशल समाज में, या जो भी वैदिक व्यवस्थाएं हैं, वैज्ञानिक व्यवस्था हमारी जो, तो उसमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए ये पेशा का साधन है वर्ण व्यवस्था। ओ Right. So essentially, Varna is what you acquire as your means of earning a livelihood and contributing productively to the society. And it has no relationship with jati, which you actually uh, belong to organically rather than choose to be part of. So, therefore, Varna is more profession and how you contribute productively to the society. And Jati is again more aggregate levels of organic belonging that you inherit by birth. We will wrap up the discussion at this point. Today, we have remained sincere to the strict definition of the four keywords of Gotra, Kula, Jati, and Varna. In a subsequent discussion, we will pick up at least some of the keywords among these four to further dive deeper into their reference in common parlance and contrast it with the imposed caste system on the Indian society.
Specifically, we will pick up on the notion of jati and varna, because these are the two keywords that specifically get recruited for confusion creation in reference to the so-called caste system of India. So please stay tuned, and we will soon reconvene to dive into the jati and varna definition and variations that has been extrapolated in the current references of abuse of the so-called caste system of India. Thank you for joining us today. Please look out for the next Fireside Chat. Thank you.